very good morning and welcome to this virtual service from St. Martin's Church, Delhi Cantonment. Today is the 14th Sunday after Pentecost, and the theme for our meditation this morning is Baptism and the Lord's Supper. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Let us praise God by singing the opening hymn. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. The collect that will appear on your screens. May we all pray together. Grant, O most merciful Father, that as through baptism we are united with your Son, to so by feeding on the precious gifts of his holy body and blood, we may grow up to eternal life through him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. We shall now have ministry of the word. The Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 55, verses 1 to 7. God's invitation to mankind is a completely free offer of fellowship and life. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Hearken diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in fatness. Incline your ear and come to me, hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Behold, I made him a witness to the peoples, and a leader and commander for the peoples. Behold, you shall call nations that you know not, and nations that knew you not shall run to you, because of the Lord your God, and of the Holy One of Israel. For he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him run to the Lord, that he may have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. This is the word of the Lord. Today's responsive reading is Psalm 116, verses 1 and 2, 6 to 9, and 12 to 15. Your response shall be, Gracious is the Lord and righteous. I love the Lord because he heard my voice when I made my supplications before him. Because he inclined his ear unto me when I called upon his name. Gracious is the Lord and righteous. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he saved me. Turn again then unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt so lovingly with thee. For thou hast saved my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. Gracious is the Lord and righteous. What shall I give unto the Lord for all the benefits that he hath done unto me? I will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord in the presence of all his people. Right dear in the sight of the Lord is the death of them that serve him. Gracious is the Lord and righteous. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 11। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 1 से 11 तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं?
क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। Beloved in Christ, as we prepare to listen to the Holy Gospel, may we sing our gradual hymn. Break thou the bread of life, O Lord, to me, as thou didst break the loaves beside the sea. Beyond the sacred gate, I seek thee, Lord. My spirit longs for thee, O living Word. Thou art the bread of life, O Lord, to me. Thy holy word, the truth that saveth me. Give me to eat and live with thee above. Teach me to love thy truth, for thou art love. Oh, send thy Spirit, Lord, now unto me, that he may touch my eyes and make me see. Show me the truth concealed within thy word, and in thy book revealed I see thy Christ reveals that his flesh and blood offered for the life of the world is the true food and drink of eternal life. The Holy Gospel has been taken from Gospel according to St. John, chapter 6, verses 47 to 59. Jesus said, "Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your father ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die. I am the living bread which comes down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh." The Jews then disputed among themselves, saying, "How can this man
give us his flesh to eat. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not such as the fathers ate and died. He who eats this bread will live forever. This he said in the synagogue as he taught at Capernaum. This is the gospel of Christ. Friends, I'm happy to announce the names of those who would be celebrating their birthdays during the coming week from our St. Martin's Church family. We have Michelle Lal, Group Captain Roy M. Rogers, Shanti Aruldas, Mrs. Erica Collinson, Mayank Luke Rao, Santosh S. Singh, J. S. Kellogg, Vineet Isaac Milton, Winnie Massey, and Ritika Singh, who would celebrate their birthdays during the coming week. May we offer a prayer for all of them. Let us pray. Gracious, loving Heavenly Father, we come into your holy presence, thanking you, praising you, and glorifying your holy name for protecting us, for giving us this gift of life, and especially to those whose names we have pronounced here in your presence this morning. We pray for your special blessings to be upon each one of them, and pray, Heavenly Father, that you would bless their homes, their families, their near and dear ones, and, Heavenly Father, their professions. That as you bless them, Heavenly Father, we pray that they in turn may become a blessing for others. May this new year prove to be a special blessing for each one of them, that they may be blessed with health, wealth, and happiness. In Jesus' mighty, sweet, and holy name we pray. Amen. Beloved in Christ, this message is audio today. The reason being the guest preacher we had booked had sudden work, and he could not send us the video clip so that you could hear him. And he is none other than our Synod General Secretary, our former pastor here, Reverend Dennis Lal. He sends his greetings and apologizes for not being able to do the needful, owing to a very, very busy schedule. God bless you. Amen. Beloved in Christ, today is the 14th Sunday after Pentecost, and the theme for our meditation this morning is baptism and the Lord's Supper. And therefore we focus on these two important sacraments of the Christian faith. And we know what a sacrament is. A sacrament is an outward sign of an inward grace. One can imagine the status of Christian faith had not Jesus instituted the baptism and Lord's Supper. Before he ascended into heaven, he commissioned the disciples, saying, "Go ye and preach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit." Regarding the Lord's Supper, he said, "As often as you take it, do this in remembrance of me." In order to keep Jesus alive and the subject of salvation alive, all must be baptized, and when they grow up, they must partake of the Lord's Supper. Symbolic remembrance of how he gave his precious body
and shed his precious blood upon the cross so that we might be saved and have eternal life. Now, there are two main kinds of baptisms. One is by sprinkling of water and one by immersion. We also have the infant, of course, the adult baptism. Also, the Lord's Supper is administered both through the chalice as well as individual cups. So, the important thing is not the manner in which it is received, but the ultimate aim of celebrating is to continue celebrating it until He returns. Both these sacraments are interrelated in the sense that only those who are baptized can only be confirmed, and only those confirmed in their faith or have matured in their faith should approach the Lord's holy table. Baptism is by water, which is associated with purification. The priests took bath before and after performing religious ceremonies in the temple at Jerusalem. People had to wash before entering the temple. There is a mention in John 2 of large containers filled with water meant for washing outside Jewish homes. Now, there are few sermon points or few points for us to focus on based on the readings that we have heard today. First is from Isaiah 55, verses 1 to 7, where we realize that it is God's invitation to mankind which is completely free for fellowship and life. Second is, of course, from Romans chapter 6, verses 1 to 11, where baptism, we read that baptism unites us to Christ, in whom we die to sin and become alive to God. Our old sinful self is destroyed, and we are then no longer enslaved to sin. And third, of course, is from the Gospel of John chapter 6, verses 47 to 59. Here Jesus reveals that his flesh and blood are offered for the life of the world and is the true food and drink of eternal life. As believers, we acknowledge that through baptism we are united with Jesus, and through the Lord's Supper we grow up to eternal life. Though the ground reality may be quite different, as after the baptism, how many really die to their former sinful lives and give up sinful lives, we do not know. How many come spiritually prepared to receive Lord's Supper is a question as individuals we all must answer. I am no one to judge, but there are things that are skipped that are associated with these sacraments. First of all, take the example of Jesus Christ himself, who washed the feet of his disciples before instituting the Lord's Supper. And so we must take a clue from there and begin to humble ourselves before approaching the Lord's Supper. And of course, we recite the prayer of humble access. Another point is confessing our sins to one another and pledging never to repeat. Now, the baptism that John the Baptist gave was the baptism of repentance, who said, the axe is laid at the root of the tree. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And of course, so it is uprooting our sinful self, or the roots of sin, so that each time we go, our graph of sin, which keeps increasing, must now on start reducing. And finally, understanding the word, like the eunuch who said to Philip, "What should prevent me from being baptized?" That is the kind of zeal and spirit
those of us who understand and accept Jesus as the way, truth, and the life must continue to respect and honor these two sacraments, the Lord's Supper and the baptism and the Lord's Supper. May God bless all of us. Amen. आज पेंतिकोस्त के बाद का 14वां रविवार है और हमारी आराधना का विषय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बपतिस्मे और पाकशाह के लिए। हम एक कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये दो सैक्रामेंट्स ना होते तो हमारी जो ईमान का जो स्तर है वो किस प्रकार का होता कि प्रभु यीशु ने ये जो बपतिस्मा और हमारे पाकशाह की रस्म को नियुक्त किया, उसने ये भी कहा अपने चेलों को, जाओ और संसार भर में प्रचार करो और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये जो हमारा ये मकसद है पाकशाह को लेने का, वो ये है कि हमारे प्रभु यीशु की यादगार सदा तब तक बनी रहे जब तक वो वापस लौटता नहीं, और इसी के द्वारा हम जो है जो मुक्ति का संदेश है उसको भी हम ताज़ा रखते हैं और उसको ज़िंदा रखते हैं। इस संसार के अंदर, ख़ास तौर पे जो चर्च सर्कल्स के अंदर, जो हमें दो तरह के बपतिस्मे देखने को मिलते हैं। एक तो वो हैं जो हम छिड़काव करके छोटे बच्चों को, नादानों को बपतिस्मा देते हैं, और एक होता है हमारा जो अडल्ट बैप्टिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, बाय इमर्शन, यानी कि डुबकी का बपतिस्मा। जो ये पाकशाह है इसका भी इसी प्रकार से है। एक तो ऐसा है कि हम एक कप ले लेते हैं, उसमें से सब लोग अपना एक सिप ले लेते हैं। दूसरे ऐसे भी हैं चर्चेस जहाँ पर कि लोग इस प्रकार की एकता नहीं रखते और वो अपने अलग अलग एक एक जो है कप्स में ये प्रभु यीशु का जो चिन्ह के रूप में जो लहू है वो मैं के रूप में ग्रहण करते हैं। दोनों जो ये सैक्रामेंट है, सैक्रामेंट का क्या मतलब है कि एक बाहरी चिन्ह और अंदरूनी उसकी अनुग्रह है। वो हमारे बपतिस्मे में भी देखने को हमको मिलता है और हमको ये पाकशाह के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। जो बपतिस्मा जिनका हुआ है वही उनका ही दृढ़ीकरण होता है। जिनका दृढ़ीकरण है वही लोग पाक मीज़ के पास आ जा सकते हैं। और ये जो बपतिस्मा है पानी के द्वारा, इसका क्या है, इसका ताल्लुक जो है वो पवित्रता से, शुद्धि से ताल्लुक है। कि जो यरूशलेम के जो मंदिर था उसके अंदर जो ये पुरोहित लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो भी रस्म करते थे वहाँ पर, उससे पहले और उसके बाद दोनों में क्या करते थे, वो स्नान करते थे। और लोग जो थे वो अपना जो मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले भी अपने हाथ धोते थे। और उसके बाद है जो यूहन्ना 2 के अंदर हम जो पढ़ते हैं, जहाँ एक जिक्र है कि वहाँ पर 5 जो थे, जो काना की शादी प्रभु यीशु ने एक अटेंड करी थी, कि वो वहाँ लिखा है कि वहाँ बड़े बड़े जार थे पड़े हुए, जिसे हम घड़े कहेंगे, वो क्या है वहाँ पर भर के पानी से पड़े हुए थे। इसलिए था कि लोग भी आते जाते धूल मिट्टी को धोते थे। आज 3-4 हमारे पास जो रीडिंग्स हमने करी हैं, जो हमने प्रभु के वचन से सुना है, उसमें से भी कुछ सीखने की कोशिश करें। जो पहला यशायाह नबी के 55वें अध्याय के 1 से 7 पद में, वहाँ हमें पता लगता है कि जो परमेश्वर का एक निमंत्रण है मानव जाति को, कि और वो बिल्कुल निःशुल्क है कि वो आकर के उससे संगति कर सकें और नवजीवन पा सकें। जो दूसरा हमारा है वो है रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 1 से 11 में। और यहाँ पर जो पौलुस प्रेरित लिखता है वो कहता है, बपतिस्मा जो है हमें प्रभु यीशु से हमारा मिलन कराता है कि, और जब ऐसा होता है तो हम लोग पाप में तो मर जाते हैं और परमेश्वर में जी उठते हैं, और हमारा जो पापमय जो स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाता है,
विनाश हो जाता है और फिर हम इस पाप के अधीन नहीं रह पाते, फिर तो हम मुक्त हो गए। तीसरी जो हमें यूहन्ना की इंजील के 6 अध्याय के 47 से 59 पद में लिखा है, और वहाँ पर प्रभु यीशु एक और रहस्य बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो मेरा मांस और मेरा लहू है वो तुम्हारे जीवन के लिए, संसार के जीवन के लिए, मुक्ति के लिए दिया जाता है। और ये जो है यही सच्चा भोजन है और यही सच्ची एक हमारी प्यास बुझाने के लिए एक तरह की ड्रिंक है, जिससे के द्वारा हम अनंतकाल जीवन में प्रवेश करते हैं। और इसलिए हम जो हैं विश्वासी होने के नाते हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि जो बपतिस्मा है वो हमें प्रभु यीशु से संयुक्त करता है, और ये जो हमारा पाकशा है इसके द्वारा हम पवित्र अपने जो अनंतकाल जीवन की ओर बढ़ते हैं। और इसकी जो हकीकत क्या है कि जो प्रश्न मुझे और आपको आज अपने आप से करने आवश्यक है कि क्या वास्तव में जो मेरा पूर्व जीवन था पापमय, क्या वो वास्तव में वो मेरे से छूट गया है या अभी भी मेरे साथ लगा है। इसके साथ साथ कि क्या जब मैं पाकशा लेने जाता हूँ क्या मैं अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करता हूँ। यदि प्रभु यीशु को देखें, जिस रात उसने वो पकड़वाए गए और इस हमारे पाकशा की स्थापना करी गई, तो लिखा प्रभु यीशु ने अपने चेलों के क्या किया, उन्हें उनके पैर धोए। और यही मेरे और आपके लिए भी अवश्य है कि हम भी इस बात को याद रखें कि हमें अपने आप को नम्र करना है। और इसके साथ है लिखा है कि और भी हमारे लिए जो बपतिस्मे के बारे में हमें मालूम है कि इसके लिए हमें क्या है, अपने हमारे जो पाप हैं उसको स्वीकार करना बहुत अवश्य है। जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता संदेश देता था वो यही कहता था, कुल्हाड़ी जड़ पे लगी है और पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यदि ये हमारे अंदर नहीं हो रहा है तो हम बस एक रस्म पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार की जो समझ की हमें आवश्यकता है, कैसी समझ कि जिस प्रकार से एक वो खोजा था जिसे फिलिप्पुस ने क्या किया था, उसको कहने लगा भाई ये सब तो मैंने समझ लिया, अब क्या चीज़ है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती है। मैं सोचता हूँ यही वाली समझ की आज हम सबको आवश्यकता है कि हम इन दोनों रस्मों का आदर करें। यदि हमने वास्तव में प्रभु यीशु को मार्ग, सत्य, जीवन के रूप में जान लिया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि इन्हीं के द्वारा हमारा ईमान बढ़े और प्रभु यीशु का जो यादगार है उसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और उसकी यादगार सदा अमर रहे जब तक वो वापस इस धरती पर नहीं लौटता। आमीन। Let us reaffirm our faith together in the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान मोहताज से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं दूर करने के लिए, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची यगानगत और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, सनती धंधे
या तिजारत में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, मुसन्निफ़ों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, ख़ासकर जो कोरोना बीमारी के मरीज़ हैं, और तमाम दुनिया में जो उनके इलाज और तीमारदारी में मसरूफ़ हैं, जो गरीब और भूखे हैं, जो मोहताज और कुचले हुए हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो बीमार हैं, ख़ासकर इस कलीसिया के बीमारों और बुज़ुर्गों के लिए, और वो जो मरने के करीब हैं, और सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे सदर मुल्क, वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के मुंसिफ़ आला, इस सूबा दिल्ली के हाकिम और वज़ीर आला, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की यगानगत और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और ख़िदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे बिशप और मॉडरेटर पीसी सिंह, जनूबी भारत के मॉडरेटर धर्मराज रसालम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन मार थियोडोसियस, हमारी कलीसिया के पासबान सुनील गलन और सैमुअल शेखर और दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत वफादारी से बजा लें। ये बख्श कि तेरे उन लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी दुआओं को जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से करते हैं, कबूल फरमा। The confession of sin. Beloved, our Lord Jesus Christ said, "The Lord our God is the only Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. God so loved the world that he gave his only Son Jesus Christ to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let's therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let us say together, Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another, in thought and word and deed, in the evil we have done, and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgives all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us. Pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God.
The peace of the Lord be always with you. Let us present these offerings and with them ourselves for the service of the Divine Majesty. All things come from you, and of your own do we give you. Almighty God, Creator of the world, we ask you to accept these offerings for the glory of your name and the good of your people, through Jesus Christ our Lord. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Let us receive God's blessings. And now unto God's gracious mercy and protection we commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you and give you his peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and remain with each one of you, and with all your dear ones wherever they may be, and especially in each and every home that has watched this worship service and have participated in it, now and forevermore. Amen. Amen. Amen.
Friends, before we sing our closing hymn, I must thank people behind the production of this worship service. I wish to thank, first of all, Mr. Alvin Theodore, Mr. John Manohar, and Nitin, who so dedicatedly work hard in order to produce this beautiful worship service that all of us have participated in it. I wish to thank the musicians and the leaders who have so kindly did their bit and contributed to the beauty of this worship service. May God bless each one of you. Amen. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Lord, oh, for grace
Go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen.